when they are interacting and No chatting. way, bargaining is also happening. Wow, girls, can you listen to this here, please? You have to get on this right now. That's amazing. I think it's great there that now influencers can harness the power of Flipkart, reach out to the customers. Tell us more, what more is there for influencers here? Yeah. So the other big thing that we are launching as we speak, we are calling it the Flipkart Affluencers Program. It's kind of a portmanteau of affiliate program and influencers. We are calling it as an Affluencers Program. So all of the influencers, celebrities, all of you have significant amount of following on the platforms where you post content, right? It may be YouTube, it may be Insta, it may be any other platform where you're engaging your audience. We want to be able to give you a way for using our product catalog. We will give you, for example, early access cheat sheets for new product launches that are coming, deals that are going to come on the platform, etc. So influencers can be ready, prepare their videos and be ready to go when the product drop happens. And be able to engage the audience and of course monetize, right? So we have launched this with partners. These partners are around as well, so any influencer who wants to check out how it works can go sign up with the partners and learn more about the program and get going. In fact, we did a soft launch of this just about a month back. Signed up basically maybe about, by now it would have been about 1,500 influencers who have already signed up. And they posted, I think on last count, a few days back, about 5,000, 6,000 videos. And we have already generated about close to 50 crore impressions. Oh, that's huge. Congratulations. Thank you on these videos. And we think that influencers and celebrities are a very important part of the ecosystem for, especially for these inspiration-driven categories. And we want to deeply partner with all of you and really grow the market, develop this category, and we would love to have Flipkart be the platform of choice for customers to be inspired, discover new products, and we will continue working with all of you to develop this property further. Amazing. That's a great news for all the influencers and celebrities out there. I think this is going to be like a huge platform now. So congratulations to you guys for already being so successful, and I hope that this continues and I'm a part of your family as well. Of course. Thank you. All the influencers do check out the Flipkart Affluencers counter that's there exactly. I think it's going to be massive, something that you can all use and build your story on the platform. And of course, needless to say, there's a QR code above. You can scan that as well to directly go to the pages where you can get more information about the program and start signing up. Absolutely. Thank you so much for sharing these details, because we are very excited for what's coming up next in Flipkart, and this is exciting news. I have give it up for them, everybody. Come on, make some noise. Yes. Thank you. You know, by hearing everything you guys were discussing, I have to say that Flipkart is ready to flip all of you, because the future is absolutely amazing, right? Okay. Everybody, thank you again for joining us here. Thank you so much. Thank you guys. And Ishan. Ladies and gentlemen, with this, we have these amazing guys who have entertained you, spoken so much about what's coming up next, and now we'll bid an adios to you guys. Thank you so much. Thank you. Thank you. All right, everybody. It keeps getting exciting. Join us again. On behalf of Flipkart Glam Up 2024. Right from creating waves at the Cannes Film Festival to, of course, where we're looking forward to Love Ki Arranged Marriage. It's always about love with Avneet. बचपन से लेके इतना प्यार उन्होंने हासिल किया, so truly thankful on behalf of Flipkart Glam Up. But क्या कहना चाहेंगे? You always look naturally glamorous. Oh my God, thank you. Now that's something that I love, naturally glamorous. I'm really excited to be part of this event because
I think we launched something really amazing that's going to change the market, I feel, completely. There's live shopping that's happening, there's live. You can try on clothes, you can try on different products, and it's like I felt like over there, like I don't need a stylist anymore because now I can like virtually just try clothes on and just like create a look out of nothing. I mean, and that's such an amazing thing, and congratulations to the whole team of Flipkart because this is huge, and I personally feel that it's going to change the market completely now. Thank you, love. Thank you so much. Thank you. Please. Yes, Avneet, you look हाँ जी। center, सवाल left right. हाँ जी। Good to see you, Avneet. You know, आप जहाँ भी Thank you. जाती हैं, like आपके fans आपके picture का posting का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, and day by day मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ कि आपकी जिस तरह से popularity बढ़ती जा रही है, and Flipkart Glam Up Fest के लिए यहाँ पर आप आई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? And yes. थैंक यू सो मच पहले तो फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड बहुत एक्साइटेड हूँ टू लॉन्च दिस फीचर विद फ्लिपकार्ट बिकॉज आई थिंक पर्सनली जैसे मैंने बोला भी और मैं बहुत एक्साइटेड थी स्टेज पे क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हिंदी में बात करूँ इंग्लिश में You comfortable हिंदी में भी बात कर सकते हैं. एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इजीली चीज़ें ट्राई कर सकते हो अगर किसी का मन नहीं है शॉपिंग करने का या डोंट वांट टू गो आउट समवेयर यू कैन जस्ट लाइक स्विच ऑन टू योर फ्लिपकार्ट अकाउंट एंड यू कैन इजीली ट्राई ऑन आउटफिट्स एंड क्रिएट अ होल लुक with your outfits and you can try on makeup, you can try on clothes, shoes, every accessories, everything you can try on. And also the fact that people get so influenced by influencers and celebrities nowadays. So you can actually create, if they share the links with you, you can actually create what they are wearing. You can have the same stuff for yourself as well because people love to do that. And that is a huge thing I feel that's going to change the market completely. Yeah. Avneet, we just want to know what does it take for you to decide who you are going to collaborate with because there's a whole business sense to this industry as well. So how Agree. do you take this business decision? Like who are you collaborating with as an artist? Because you're associating a name and brand. As an artist, when I'm talking about clothes or as an actor collaborating with different people, like what do As you? an actor collaborating with these brands like Flipkart and more. Okay, so I feel it's amazing to be collaborating with Flipkart, especially because they've come up with something completely unique. And I personally, myself, I love experimenting. I'm a person that experiments with my style, my outfits, everything. So I think that's what they have done, and I love people and I appreciate people that do that. So I would love to congratulate the Flipkart family for this, and I would love to be a part of the Flipkart family as long as it is. As you said And about cans के बाद. shopping, and as you said about shopping, तो आप जब आप shopping करने का सोचते हो तो ऐसी कोई 3 चीज़ जो आप सबसे पहले आपके माइंड में आती है? जैसे कि हमने स्टेज पे भी बात की कि बेसिक शॉपिंग क्योंकि हर आदमी करता है हर इंसान को होता है कि कोई बेसिक शॉपिंग करे तो वो भी आप इधर कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मेरे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बेसिक्स का शॉपिंग करना जैसे एक मेरे पास अगर एक बेसिक वाइट टी शर्ट है एक बेसिक रिप्ड जीन्स है और एक बेसिक जैकेट है तो मैं कुछ भी उसके अराउंड क्रिएट कर सकती हूँ और अगर और बेसिक वाली चीज़ों के बारे में बात करो तो फिर बहुत ही हो जाती है पर ये 3 आई थिंक इसके अराउंड आप अपनी एक आउटफिट क्रिएट कर सकते हो And lastly, कैंस के बाद हम कौन से ग्लैमरस अवतार में देखने वाले हैं अवनीत जी को? ग्लैम तो कभी ख़त्म नहीं होगा ग्लैम और ये फैशन तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला आई लव टू स्टाइल माई सेल्फ आई लव फैशन आई लव एवरीथिंग अबाउट फैशन तो अभी तो पहले यही बोलना चाहूँगी कि मेरी एक फिल्म आई है लव की अरेंज मैरिज ZEE5 पे तो आप प्लीज़ वो देखिए जाके उसमें बहुत सारे ग्लैमरस लुक्स आपको मिलने वाले हैं इवन आपने एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जैसे आपकी मूवी का नाम है लव की अरेंज मैरिज तो आप सबसे ज़्यादा कौन से मैरिज पे बिलीव करेंगे है आपको पता है मैं ये इंटरव्यू कब से दे रही हूँ और यही सवाल मुझे एक हफ्ते से परेशान कर रहा है सबको मेरी शादी की इतनी क्यों पड़ी है यार अभी रुक जाओ थोड़ा अभी टाइम है काफ़ी तभी होगा तो यार आई पर्सनली बिलीव इन लव मैरिज बट अगर पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक लव मैरिज हो तो वो अरेंज्ड भी हो जाती है और लव भी हो जाती है तो ऐसा कुछ हो जाए तो सही है बढ़िया है नहीं हो तो फिर रोएंगे बैठ के और क्या Thank you so much.
never leave any gift. But guys, from what I understood, you are going to make our Indian Janta more lazy. This is what it looks like. Means you touch it, you wish it, it's here in a few minutes. Exactly. We want to really ensure that your flexibility, convenience is at the top. Convenience and flexibility and laziness is going to increase, guys. This is what we are doing. Flipkart has a plan. Yeah, and whatever you want, everything you'll get in minutes. That's what we are here for. No getting up from the couch. Matlab now if I need to gift something to my friend on birthday, I don't even have to make an effort to go and shop. Matlab my friend will feel कि इतना भी नहीं किया इसने मेरे लिए. Now I'm just sitting and swiping and selecting. That's Maybe you can tell the friend that you put in the effort and secretly swipe it. Yeah, my finger is putting the effort. Absolutely. Yeah. Or Flipkart is putting the effort to you. Yeah. We are here for your convenience and delight. Alright, Flipkart. I'll tell you if the friendship survived this or no later. I think this is just want to tell you that we are coming out with an amazing offering. Just wait, tune to this, and you'll see a lot of announcement happening in this space. Thank you. Thank you. Thank you, Taapsee. Thank you so much. Pleasure. And I hope you enjoyed the gift that you ordered for yourself. Thank you so much. I enjoyed and I'm amazed and I'm still like trying to understand you people are going to make our lives very easy and lazy very soon. But congratulations Thank you. for yet another feather in your cap, and I'm sure it's going to get bigger and bigger from here. Thank you. Thanks for all this. Thank you. Yeah. Thank you so much, guys. Thank you. Firstly, please give it up for Taapsee, Hemant and Rashmi. Thank you so much. Wow. What an incredible conversation we've had. And did you like the surprise? Did you like the surprise? Surprise with the surprise, first of all. Like, this is actually going to happen in life for real very soon. That things, whatever you want to order, which you have to really step out and select, are going to be there within a few minutes. I'm still trying to seek that in. Taapsee, I've got to tell you, Flipkart is your new genie. I think, yeah, that's what I'm going to call it now, the Flipkart genie. Absolutely! Thank you so much, guys. Please give it up for them one more time. Yes? Come on, make some noise, make some noise. Thank you for joining us. Thank you so much. Thank you. Alright, stay tuned. We have so much more coming up, and now you can catch Taapsee, and she's walking around, taking photographs, and we'll see you back here for more launches coming up. मचा रहा है क्या तापसी या Ladies and gentlemen, what a huge honor to have with us a supremely gorgeous, stunning and talented actress, Taapsee Pannu. नहीं सुंदर बुलाते हो उनको Sundar actress Taapsee Pannu. We do congratulate her, of course. And at the same time, she's won hearts all across the world with her inner beauty. And we are truly overwhelmed and elated. And on behalf of Flipkart Glamour 2K24, we welcome the naturally glamorous Taapsee Pannu. Yay! Thank you so much, love. Oh my God. It is absolutely a beautiful experience. सबसे पहले तो बताइए, how does it feel being a part of the Flipkart Glamour family now, knowing that you always been natural and you look glamorous? Yeah, I think because glam ka matlab, it's not like you have to add on a lot of things. You just take care of yourself well enough to look glam. And I at least feel the way you carry yourself is also a big part of being glamorous, and hence I always thought I am, but if you say so, if you insist, I'll agree. Yes, and we love you. Friends from the media, please, Yes. your questions. यस हाँ जी. तो सुंदर जी सबसे पहले तो बताइए कि फ्लिपकार्ट ग्लैम अप फेस्ट के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी आप स्टेज पे देखा मैंने ये रियलाइज़ किया है कि इन्होंने ना भारत की जनता को और लेज़ी बनाने का ठान लिया है कि अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तुम जाके दुकान में शॉपिंग भी नहीं करोगे, तुम सिर्फ अपने ऐप पे क्लिक करोगे और वो कुछ ही मिनटों में तुम्हारे घर पहुंच जाएगी वो आइटम. तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये हमारा ईज़ ऑफ कंफर्ट है कि ये हमारे को और लेज़ी करने वाला है.
तो ये तो बहुत बड़ा और एक्साइटिंग एडिशन है फ्लिपकार्ट ने जो किया है. अब देखने में मज़ा आएगा कि जनता कितना यूज़ करती है इसको. बिल्कुल. सो क्या कुछ शॉपिंग करने में क्या कुछ बिलीव करती है ऑनलाइन एंड शॉपिंग करने में बहुत बिलीव. हाल फिलहाल में जो आपने जो शॉपिंग किया है बहुत हाल फिलहाल में मतलब फेवरेट सब कुछ, परफ्यूम से लेके हेयर केयर से लेके स्किन केयर से लेके. आई थिंक आप एक लड़की से पूछ रहे हो, वो भी इस इंडस्ट्री में जो है, तो मतलब मैंने तो कोई कैटेगरी छोड़ी नहीं होगी शॉपिंग करने की. हाँ, वही एक वाइस है मेरा कि मैं बहुत शॉपिंग कर सकती हूँ. अपना मूड ख़राब हो तो भी अच्छा करने के लिए शॉपिंग कर सकती हूँ. ऐसा भी होता है मेरे साथ कभी कभी. आपको क्या पसंद पापा है, को मत इत्र या बताना. परफ्यूम? आपको क्या पसंद है, इत्र या परफ्यूम? सही ऑनेस्टली तो परफ्यूम. और कुछ और ऐसी तीन Ladies? चीज जो आप शॉपिंग जब करने जाते हैं सबसे पहले आपके माइंड में आता है? ग्लैमर से रिलेटेड बोलूँ तो मुझे अलग अलग तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स कलेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कर्ली हेयर एक ऐसी कैटेगरी है जो आसानी से नहीं मिलते हैं प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट्स मिलते भी हैं वो मुझे ट्राई करने में मतलब समझ में आएगा कि ये वर्क कर रहा है मेरे बाल पे कि नहीं कर रहा है. तो वो एक बहुत लिमिटेड रेंज होती है. तो मैं सबसे एक्साइटमेंट मेरी होती है देखने के लिए कर्ली हेयर रेंज में किसने क्या निकाला है. सो आई शॉप दैट अ लॉट सबसे पहले तो. Any suggestions for regarding fashion? Rainy season रेनी सीजन में रिगार्डिंग फैशन, जो भी मेकअप करोगे वो धुलने के चांसेस बहुत हैं. तो फिर एक काम करो, मतलब स्किन केयर पे ध्यान दो ज़्यादा मेकअप से रेनी सीजन के अंदर. मे बी नेक्स्ट सीजन में विंटर में उसके बाद मेकअप कर लेंगे. ठीक है. हाँ जी, हाँ जी. हम आपको किस अंदाज में देखने वाले हैं, सुंदर या क्या? अभी हसीन आ रही है, फिर आई हसीन दिलरुबा एंड खेल खेल में. ये इस साल ये दोनों पिक्चरें आएंगी, बहुत ही मतलब डिफरेंट दोनों चीज़ें. एक रोमांटिक थ्रिलर है, दूसरी आउट एंड आउट कॉमेडी है. खेल खेल में आउट एंड आउट कॉमेडी है. सो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स हैं दोनों, और वो बहुत मुझे लगता है कि पास रिलीज़ होने वाली हैं जिस हिसाब से रिलीज डेट्स आ रही हैं. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के ऑडियंस दोनों को कैसा रिएक्शन देता है. एक तो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है, दूसरी थिएटर में आएगी. इवन तापसी आप 10 साल से ज़्यादा इंडस्ट्री को दे चुके हैं. हाँ, माय गॉड, 14 years. सडनली मुझे एंटीक फील हो रहा है. हाँ बोलो. 10 साल इंडस्ट्री को मैंने दे दिया. हाँ, उसके बाद ज़्यादा दे दिए. ओके. फिर तो इस चीज़ को आप किस प्रकार देखते हैं, मतलब जब आप स्टार्टिंग की थी और अब जहाँ पर आप या जिसने ऐसा कोई बेंचमार्क बना के मैं आई नहीं थी, तो मेरे लिए सब कुछ बोनस है. मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ऐसे इतनी मतलब मीडिया से खड़े होकर मेरे को सुन रही होगी. वही बहुत बड़ा बोनस है मेरे लिए. अगर मैं सोचती हूँ कि 10 साल 11 साल पहले मैंने क्या सोच के इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, ये सब कुछ बोनस है मेरे लिए. Even also everyone is waiting for your one look ब्राइड लुक. चलो वेट करते थोड़ी देर और. मुझे कोई आइडिया नहीं है तो मैं करूँगी ऐसा कुछ ब्राइड लुक का रिवील या ऐसा कुछ मैंने कुछ सोचा नहीं है. बहुत ही सीक्रेट नहीं, प्राइवेट पर्सनल एक इवेंट था, तो मैंने ऐसा कोई उसका प्रेस रिलीज़ करने का अभी तक सोचा नहीं है. जब दिमाग में कोई आइडिया आएगा तो सबसे पहले आप लोगों को पता चलेगा. Tapsi will request them for one-on-one look. When I said shooting, that happened, right? Bangalore. Okay, guys, tell me more about the song. No, we're just really grateful that we got to do this because it's such an iconic song and we loved recreating it. And of course, we were directed by Farah ma'am, and she is a Bollywood legend, a choreographer, and to be able to shoot with her and perform with her is Well, such an iconic song. I think everyone in the 90s remembers the iconic Mr. Akshay Kumar moving to it. And all these years for us youngsters to get our first opportunity and that to moving to such an iconic song was a really special moment. And we've had Badshaahs like cool and happening. A lot of fun for us. Absolutely, it looks like fun. It looks like so much fun. I'm sure all of these guys agree, yes? Guys, did you like this song? We're wearing the shades and we see it. What about you?
it was a great experience, yeah, and whatever we are doing right now is just for you guys. And I hope you'll have seen the other songs as well. Yes? Yes? Which is your favorite song till now? Express? Yeah. Sony? Okay, how about this? How about we take some votes and see the loudest noise, huh? How many for Ish Wish Pyar Pyar? Make some noise, we love it! How many for Sony? Make some noise! Okay, and now for this rocking awesome one. How many for Gore? I think Sony is, no? Definitely. Pyar Not Chot Dil Pe Lagi, guys. Oh, what about Chot Dil Pe Lagi? You have so many songs you've forgotten about. Romantic? All songs. That's my brother there, bro. That's my brother. You're the man. You're the man. अच्छा ऐसे मतलब देखो एल्बम के बारे में नहीं बोला था उनको सेल्फी लेना था राइट He wants to say something about the film. सेल्फी तो मिल जाएगा लेकिन ये मूवी ऐसा है ना जिसका नाम ही एक इमोशन है तो इन लोगों की तरफ से मैं बोलता हूँ प्लीज ये मूवी 2 बार 3 बार 1 वाली 2 वाली जितनी वाली के साथ सबके साथ देखना अच्छा तो जो करंट है एक्स है सबके साथ देख ले एक होता है ना देखो पहली वाली थी इश्क वाली विश प्यार चलता रहना चाहिए ओए क्या बात है इसको मेरे पैसे दे दो सर आप हमारे साथ चलो प्रमोशन के लिए आप बहुत अच्छा प्रमोट करते हो थैंक यू ब्रो थैंक यू बिकॉज ये सॉन्ग ही इमोशन है जो मैंने बोला चोट दिल पे लगी थैंक यू Yeah, you know what, they will come down आपने इतना प्रमोशन कर दिया they will come down for you but it's okay let's have a great selfie okay Thank you. Alright, thank you for joining us. You know what? Before we close this, I want to hear from you, your sweet voice as well. How excited are you for the movie and the song? The movie, it's like a dream come true, and I would just want to thank each and every one of you for giving us so much love. You guys are incredible. Thank you for giving the song love. Thank you for giving all the songs love. And I hope you give our film as much love on the 21st of June. Looking forward to you all watching it. Thank you, guys. Thank you so much. Before that, everybody, आपके पास चश्मे हैं. Please wear them. What we're going to do is, we're going to take a lovely selfie with everybody with the chashma. Okay? There you go, chashmas. There you chashma. I like your twinning, huh? Very cool. Chashma. Good? Chashma. Ready? Okay, can we have somebody on the stage taking a selfie with us? Who's coming on stage for this? Camera guy. Yeah? Let's all sit down. You know, I want you guys to be in the center and we sit down. Everybody got to make the noise. And yeah, let's sit because everybody else will come. Put your hands up, everyone. Okay, we're going to stand. Everybody? Yeah, well, you need that little space probably for everybody. Everybody put your hands up. I want you to give me a yeah! Alright, make some noise, everybody. One more time. This is going to go online. A video coming up. I want you to put your hands up on the count of 3. 1, 2, 3, let's go! Wow. I'd like to say that you guys just raised up the heat in this room. Thank you so much for coming to the Flipkart Glam Up Fest 2024 and making this such an exciting one. Thank you for joining us. And now, look at the fans. They're all ready for you. These guys are all yours. Let me see how they're going to escape you guys. All right. All right. Let's go. Thank you so much for joining us here. And congratulations. Wishing you all the very best for Ish Wish. Here at our Flipkart Glam Up. Welcome. Congratulations. Please join us here. माइक पे आ जाइए माइक पे चलो आओ खिंचाओ अरुण पीछे अरुण
voice. What a huge honor to have all of you here with us. Thank you so much because you are all with love personification. Absolutely. It's always really nice to be a part of events, you know. It's always really nice to go out and be able to promote your film, meet your fans. So yeah, very happy. Yep. Yeah, Absolutely. what about y'all? You guys, how No, are I you mean, guys I just feeling? feel live interaction is one of the best mediums to understand how the audience loves you. And I Yeah. think we were great enough to get a lot of love right now. So it's just a very, very sweet feeling, and I hope we continue getting that kind of love. I definitely need to mention this to all of you कि आप चारों ने ना और जो आपका गाना है ना इश्क विश्क प्यार व्यार सोनी सोनी भी और अब से काला चश्मा भी लेकिन न सिर्फ गोरे गोरे हमारे मुखड़े पे गोले गोले मुखड़े पे काला काला चश्मा बिल्कुल न सिर्फ हमारे दिल तक बल्कि रूह तक छू गया है इश्क विश्क प्यार व्यार. So while we are sleeping, while we are awake, it is just in our minds. Do you want to do one step for everyone, for our friends from the media, especially here? So let's do. Come on, everyone, please join us. Okay. Any one step. Should we just? I don't think I can fully dance because I've Just ankle one my step, yeah, just one so step I'll before we do go that. to the question. Yeah. The hook step. Should we play the music then? Yeah, we Without just music? sing, we just sing. Ishq Vishk Pyar Vyar, that's it. Okay. Cool. 5, 6, let's go. इश्क विश्क प्यार व्यार इश्क विश्क प्यार व्यार. Thank you. Lovely. Thank you. Another question from the media, please. थोड़ा माइक के पास हैं, सब जी. क्लोज आ जाइए. और क्लोज और देखना तो सबसे पहले तो फ्लिपकार्ट ग्लैम फेस्ट में आप सभी का स्वागत है. Thank you. Thank कैसा you. रहा एक्सपीरियंस? हमने देखा बहुत ही वार्म वेलकम मिल रहा था आप लोगों को स्टेज पे, एंड ट्रेलर को वार्म वेलकम मिला है, गाना लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं. तो बताइए कि इस ग्लैम फेस्ट में कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का? सर प्यार तो बहुत मिल रहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा. और वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज द ट्रेलर ड्रॉप 2 days ago एंड वी हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ लव फ्रॉम एवरीवन. आज हमारा जो नया गाना है उसके लिए भी बहुत प्यार मिला है हमें. And we're so excited because it's actually a song that we really loved shooting. Yes. And Farah ma'am, of course, the genius with Badshah. So yeah, we're very happy, sir. Yeah. Firstly, it's a very big opportunity for us to be performing to such iconic songs. Yeah. And also having such lovely songs that are original, made for us to dance on. Yeah. So it's a big opportunity for us. And then on top of that, when we interact with the audience and get to see their reactions to it and see how excited they are and the amount of love they are giving, it is just like the icing on the cake that's already so delicious and sweet. Yeah. आई थिंक यू नो फैशन का क्या है वो बदलता रहता है लेकिन सर्टन थिंग्स ऑलवेज रिमेन द सेम एंड आई थिंक वी हैव टेकन दैट एसेंस इन गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा. पुराने ज़माने का फैशन, आज के ज़माने का तड़का. सो इट्स द राइट प्लेस टू प्रमोट आवर फिल्म, आवर सॉन्ग, एंड आई होप यू ऑल गिव इट ऑल द लव दैट वी इन फैक्ट put into making it. सर ब्रदर, जैसा आपने कहा कि हमको इतना प्यार मिला अभी बाहर, तो हम उसी के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं सर. मतलब वी वांट द ऑडियंस टू लाइक अस, एंड आई थिंक हमारी कोशिश हम जैसे कर रहे हैं, जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है, नर्वसनेस भी बढ़ रही है. एंड आई जस्ट होप जैसे हमारे गाने या टीजर्स जो भी ट्रेलर ड्रॉप हुए आप लोग वो भी प्यार दे एंड हम आपको एंटरटेन कर सकें ऑन द 21st of June in a theater near you. इवन उस तरफ ये गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा जो पुराना वर्जन था उसमें अक्षय कुमार सर, जी. तो उन्हीं का रिक्रिएट करना, मतलब उन्हीं के सॉन्ग का रिक्रिएट करना कहीं ना कहीं ऐसे चैलेंजिंग रहता है कि लोग सर वो तो म्यूजिशियन के लिए होता है ना, वो तो अभी एट दिस पॉइंट परफॉर्म करना, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक अक्षय कुमार सर का डांस और उनका जो स्टेप था, जी उनका जो स्टाइल था वो रहता है. जी. फिर